गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग्स। तो ये टॉपिक आपके पॉलिटी सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है कि वो जो क्रूशियल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के केसेस होते हैं उनकी लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करेंगे सितंबर 27 से। तो इसका थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं हम इस पूरे टॉपिक का। तो एक्चुअली जब 26 अगस्त को जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन जी रिटायर हो रहे थे, तो उनकी भी सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग्स जो थी वो लाइव दिखाई गई थी। लेकिन इसका जो ये लाइव प्रोसीडिंग का जो लाइव स्ट्रीमिंग का जो केस है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है स्वप्निल त्रिपाठी जजमेंट, जो कि सितंबर 2018 में एक PIL के बेसिस पर दी गई थी, जिसमें कहा था कि नेशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस के जो केसेस हैं उनकी लाइव स्ट्रीमिंग की जानी चाहिए। उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से भी पूछा था कि इस इशू पर आपके क्या व्यूज़ हैं, और उन्होंने कुछ गाइडलाइंस भी इशू की थी कि कैसे ट्रांसक्रिप्ट्स और जो है प्रोसीडिंग्स की आर्काइविंग करनी चाहिए। मतलब जो भी प्रोसीडिंग्स में बोला जा रहा है, जो भी ट्रांसक्रिप्ट्स है, उसको सेव किया जाना चाहिए फॉर फ्यूचर जनरेशंस। अब रिकमेंडेशंस क्या थी अटॉर्नी जनरल की? उन्होंने बोला कि हाँ, हम एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह शुरू कर सकते हैं सिर्फ कोर्ट नंबर 1 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और अभी जो है हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के केसेस को सुनेंगे। ठीक है, तो इसी के बेसिस पर ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया है। और कहा गया है अटॉर्नी जनरल द्वारा कि ऐसे कुछ केसेस हैं जिसमें ये लाइव प्रोसीडिंग्स नहीं होनी चाहिए, जैसे कि आपके कुछ क्रूशल केसेस होते हैं, मैट्रिमोनियल मैटर्स, जिसमें कि फैमिली के आप ज़रूरी नहीं है कि आप फैमिली के सारे मैटर्स को लाइव प्रोसीडिंग्स दिखाओ उसकी। ठीक है, फिर कोई जुवेनाइल्स के रिलेटेड मैटर्स हैं, अगर प्राइवेट लाइफ ऑफ यंग ऑफेंडर्स हैं, उसको भी आपको अच्छा नहीं लगता कि आप उसकी लाइव स्ट्रीमिंग दिखाओ। बाकी मैटर्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी भी, जिसमें आपको बहुत ज़रूरी है कि आपको कुछ कॉन्फिडेंशियलिटी बना के रखनी है, उसको भी आप लाइव नहीं दिखा सकते हो। ठीक है, अब हाई कोर्ट में जो ये जो आपका त्रिपाठी जजमेंट थी, उसके बाद से गुजरात हाई कोर्ट ने 2021 में लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी थी। उसके बाद धीरे धीरे झारखंड, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पटना हाई कोर्ट्स ने भी लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी है। तो बाकी दुनिया में क्या होता है? US में ऑफ कोर्स ऑडियो रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट्स होती हैं, ओरल आर्ग्यूमेंट्स की, मतलब लिखा जाता है कि क्या क्या बोला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में लाइव स्ट्रीमिंग अलाउड है, बट हर जगह अलाउड नहीं है, कई कई जो है उनके कोर्ट्स में अलाउड नहीं भी है। यूनाइटेड किंगडम में पहले रिकॉर्डिंग करना प्रोसीडिंग्स की उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता था, बट उसको हटा दिया गया और 1 मिनट डिले के साथ जो है प्रोसीडिंग्स दिखाई जाती हैं, और सेंसिटिव अपील्स में जो है ऑफ कोर्स कोर्ट प्रोसीडिंग्स नहीं दिखाई जाती हैं। ठीक है, तो अगर हम कोर्ट प्रोसीडिंग्स दिखाते हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या है? ऑफ कोर्स ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, लोगों को एक्सेस मिलेगा जस्टिस सिस्टम को देखने का। दूसरा है लीगल लिटरेसी बढ़ेगी लोगों में, लोगों को पता लगेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे चलता है, लॉ कैसे काम करता है। फिर पॉजिटिव सिस्टमिक करेक्शंस भी होंगी, धीरे धीरे जुडिशरी में भी रिफॉर्म्स आएंगे, उन्हें पता लगेगा कि जब लोग देख रहे हैं। तो अभी क्या होता है कि US के सुप्रीम कोर्ट में देखा गया कि उस टाइम पर हाईली जेंडर्ड स्टेटमेंट्स दी जाती थी ओरल आर्ग्यूमेंट्स में, लेकिन जब से ऑफ कोर्स ये रिकॉर्डिंग शुरू की तो लोग जो है US के जो जजेस हैं, जो लोग जो अंदर एडवोकेट थे, उन्होंने भी धीरे धीरे जो है अपनी स्टेटमेंट्स जो है वो थोड़ी रैशनलाइज करनी शुरू की। ठीक है, सो ये भी इसके फ़ायदे हैं, लेकिन कंसर्न्स भी हैं। ठीक है, आपको पता है ना कि यूट्यूब, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखते हो बहुत सारे जजेस की वीडियो जिसमें सेंसेशनल टाइटल यूज़ किया जाता है और बहुत मजाक बनाया जाता है, और इररिस्पॉन्सिबल यूज़ होगा उस कंटेंट का, ये भी बहुत बड़ा फेयर है। दूसरा, जजेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा आपके कॉशियस हो जाएंगे। जैसे हमने, आपको याद होगा ना कि जब से पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स हमने लाइव दिखानी शुरू की, तब से पार्लियामेंट के की जो है आप देखो क्या हाल हो चुके हैं। पार्लियामेंट जो है वो फंक्शन ही नहीं करने पाते हैं, क्योंकि उनको जो पॉलिटिशियंस हैं उन्हें लगता है कि हमें लोग देख रहे हैं, तो हम जितना ज़्यादा विरोध करेंगे, जितना ज़्यादा हम न्यूज़ में आएंगे, उतना हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, तो यही कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जुडिशरी में भी ऐसा हो जाए कि जो जजेस हैं वो इंडिविजुअल एक्सपोजर के लिए जो है वो एक्शन लेने शुरू कर दें, अपनी सारा ध्यान उनका एक पॉलिटिशियन की तरह जो है बनने में लग जाए। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, सिक्योरिटी से रिलेटेड टॉपिक है ऑफ कोर्स। तो DG जो है CRPF के, उन्होंने कहा है कि बिहार जो है वो अब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म फ्री हो चुका है। तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म होता क्या है? ये हमारा इंडिया का सबसे बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है, ऐसा प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जो थे उन्होंने कहा था। और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म चाहता है कि हम इंडिया की डेमोक्रेटिक स्टेट को उखाड़ फेंकें और जो है न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाएं अपने आप। ठीक है, मतलब जो है ऑफ कोर्स चाहे वो डेमोक्रेटिक हो या ना हो, दैट्स अ सेपरेट थिंग, बट वो करंट जो आपकी स्टेट है, इंडियन स्टेट, नॉट जस्ट गवर्नमेंट, ऐसा नहीं कि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट को ही सिर्फ उखाड़ना चाहते हैं, वो पूरी के पूरे सिस्टम को ही जो है वो चेंज करना चाहते हैं।
अब क्यों ये बढ़ता है, क्यों ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो कम्युनिटी लैंड्स के ऊपर इंक्रोचमेंट कर लेती है। फिर पब्लिक लैंड जो है उसके ऊपर जो है जो लैंडलेस पुअर जो जिसको जिसको कल्टीवेशन कर रहा है उसको उसका हक नहीं मिलता है। फिर लॉज की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है, ट्रांसफ़र ऑफ ट्राइबल लैंड टू नॉन ट्राइबल्स कर दिया जाता है, और लैंड राइट्स भी जो है वो रेगुलराइज नहीं किए जाते हैं। फिर फोर्स्ड एविक्शंस होता क्या, कई बार गवर्नमेंट जब इरिगेशन या पावर प्रोजेक्ट्स के लिए कुछ लैंड एक्वायर करती है तो जो लोग हैं उनकी रिहेबिलिटेशन नहीं करती है, अप्रोप्रिएट कंपनसेशन नहीं देती है, उनको एविक्शन कर देती है उनकी लैंड की, खासकर ट्राइबल्स की। फिर अगला है आपका लाइवलीहुड रिलेटेड कॉजेज़। लोगों को फूड की सिक्योरिटी नहीं है, तो उनके पास खाने को पैसा नहीं है, कब वो देखते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में करप्शन है, डिसरप्शन हो रही है आपकी ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस की, वर्क अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, डेप्रीवेशन है, सोशल एक्सक्लूजन है, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जा रही है, लॉज ठीक से जो आपके एट्रोसिटीज़ से रिलेटेड लॉ हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो रही है, करप्शन हो रहा है, पुलिस मिसयूज़ कर रही है अपनी पावर्स को। तो इन सब चीज़ों से जो है लोगों का जो है रादर स्टेट से, इंडियन स्टेट से ही जो है विश्वास उड़ जाता है और वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या एक्शंस लिए हैं? गवर्नमेंट ने नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान निकाला है जिसमें कहा है कि हम ज़ीरो टॉलरेंस रखेंगे वायलेंस के लिए, लेकिन अगर आपको डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ चाहिए उसको हम ऑफकोर्स पुश करेंगे। फिर एमएचए ने जो है वो कहा है कि हम कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं और अपने सिक्योरिटी ऑपरेटर्स की, सीएपीएफ बटालियंस की, और मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स स्टेट लेवल पर भी की जा रही है। सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर स्कीम निकाली गई है, स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम निकाली गई है, जिसके अंदर लगभग 10,000 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अंडरटेक ऑलरेडी किए जा चुके हैं। ठीक है, सो सब कैटेगराइजेशन भी की जा रही है डिस्ट्रिक्ट्स की। सब कैटेगराइजेशन क्या होता है, जैसे आपके दो कैटेगरीज में बांट दिया गया। जैसे अगर कोई डिस्ट्रिक्ट नवा जिसको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से मुक्त कराया हो, उसको जो है डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कंसर्न में रख दिया जाता है, ताकि मतलब वो दोबारा उस लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में फॉल ना हो जाए, इसलिए उसके ऊपर नज़र रखी जाती है। फिर जो 85% ऑफ कंट्री वाइड जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, जिन मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है वो कन्फाइंड है, उसको जो है कोर्स मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स का कैटेगरी दी गई है, और उसके लिए जो है सिक्योरिटी और डेवलपमेंट रिलेटेड वर्क भी किया जा रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पीएम केयर्स। तो ऑफ कोर्स आपके गवर्नेंस के रिलेटेड टॉपिक है ये। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली रतन टाटा जी को, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज केटी थॉमस और फॉर्मर डिप्टी लोकसभा स्पीकर कारिया मुंडा जी को पीएम केयर्स फंड का जो है ट्रस्टी बनाया है। ठीक है, पीएम केयर्स फंड क्या है? प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड, जिसको 2020 में जो है वो क्रिएट किया गया था डिस्ट्रेस सिचुएशंस के लिए। याद रखो, सिर्फ कोविड से रिलेटेड नहीं, कोई भी डिस्ट्रेस सिचुएशन कंट्री में इमरजेंसी आएगी उसमें ये फंडिंग के लिए यूज़ होगा। ठीक है, तो इसकी मैनेजमेंट कैसे की जाती है? प्राइम मिनिस्टर इसके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस इसके मेंबर्स होते हैं। जो चेयरपर्सन होते हैं उनके पास पावर होती है कि वो कुछ ट्रस्टीज़ इसमें रख सकते हैं। ठीक है, तो 3 ट्रस्टीज़ को नॉमिनेट जैसे अभी किया गया है, लेकिन ये ट्रस्टीज़ को इसके जो है बदले में कुछ पैसा नहीं मिलता उनको, प्रो बोनो कैपेसिटी, मतलब कि बिना किसी रिटर्न के उनको ये काम करना पड़ता है। ठीक है, सो ऑफकोर्स मिशन इसका यही है कि रिलीफ और असिस्टेंस प्रोवाइड कराई जा सके इमरजेंसी सिचुएशंस में। इसमें जो भी आप कोई अगर डोनेशंस देता है तो उसको टैक्स एग्जेम्पशन मिलती है। एक कंपनी अगर डोनेशन देती है तो उसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑब्लिगेशन में वो काउंट किया जाता है। और अगर फॉरेन डोनेशन दे रही है तो कोई फॉरेन जो है कॉन्ट्रीब्यूशंस मिल रहे हैं तो ऑफकोर्स उसको एफसीआरए में जो है वो एग्जेम्पशन मिलती है। ठीक है, तो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर इसके एक्स ऑफिशियो ट्रस्टीज़ होते हैं। अब अगर हम इसका कंपैरिजन करें प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड से, तो वो देखते हैं हम 1948 में उसको बनाया गया था पीएमएनआरएफ को, और इमीडिएट रिलीफ टू फैमिलीज जो नेचुरल कैलामिटीज़ के विक्टिम थे उनको रिलीफ देने के लिए उसको बनाया गया था। शुरुआत में 1948 में जो है प्राइम मिनिस्टर के अलावा उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, कांग्रेस प्रेसिडेंट, ठीक है, कांग्रेस प्रेसिडेंट और टाटा ट्रस्टी, एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टाटा ट्रस्टीज़ जो है, और एक इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव इसका मेंबर होते थे। लेकिन 1985 में जो राजीव गांधी जी थे उन्होंने जो है सारे जो है इन मेंबर्स को हटा के सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के पास ये पीएमएनआरएफ को रख दिया। ऑफ कोर्स एक जॉइंट सेक्रेटरी ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर जो है वो इसको मैनेज करता था। ठीक है, अभी भी यही सिचुएशन है पीएमएनआरएफ की। सो एक सेक्रेटरी, जो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का एक पर्सन जो पीएमओ में है, वो इसको मैनेज तो करते हैं, लेकिन जो भी पैसा निकाला जाता है वो सारा जो है वो प्राइम मिनिस्टर की ही मर्जी से किया जाता है। ठीक है,
सो अब हम पीएम केयर्स ट्रस्ट में देखें तो ऑफ कोर्स पीएम के अलावा डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, लेकिन जो भी पैसे की एडमिनिस्ट्रेशन है वो चेयरमैन के जो रादर जो मतलब प्राइम मिनिस्टर हैं उनके पूछे बिना जो है वो नहीं की जा सकती, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ब्रह्मोस, सिक्योरिटी से रिलेटेड टॉपिक है आपका। तो अभी जो है हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री ने हमारी इंडियन नेवी के लिए डुअल रोल केपेबल सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल्स को जो है एक्विजिशन करने के लिए मंजूरी दे दी है, सॉरी। सो अब ये इंडियन नेवी के लिए होगा ऑफ कोर्स। सबसे पहली बार इंडियन नेवी के लिए हमने ब्रह्मोस 2005 में लिए थे, और जो ये डुअल रोल वाले हैं आपके ब्रह्मोस, ये अक्टूबर और दिसंबर 2020 में इनको टेस्ट किया गया था। और ये डुअल रोल कैसे हैं, या तो इसको वर्टिकली भी लॉन्च कर सकते हैं हम और हॉरिजॉन्टली भी लॉन्च कर सकते हैं, और ये लैंड और सी दोनों टारगेट्स को जो है वो टारगेट कर सकते हैं, चाहे मूविंग हो चाहे स्टेशनरी टारगेट्स हों, ठीक है। अब इनकी स्पीड लगभग 2.8 मैक है। अब हम ब्रह्मोस के बारे में देखते हैं। तो ब्रह्मपुत्रा और मॉस्को रिवर आपके मॉस्को में है ऑफकोर्स, उन दोनों के नाम को मिलाकर हमने ब्रह्मोस एयर स्पेस या ब्रह्मोस मिसाइल बनाया है। तो ब्रह्मोस एरोस्पेस जो है ये आपकी एक जॉइंट वेंचर कंपनी है बिटवीन इंडिया एंड रशिया। और ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो लैंड से, वॉरशिप से, सबमरीन्स और सुखोई 30 फाइटर जेट से भी जो है वो फायर किया जा सकता है। 2 स्टेज मिसाइल है, सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर इसका फर्स्ट स्टेज है, और जो सेकंड स्टेज है वो लिक्विड रैम जेट इंजन है, ठीक है। सो स्टैंड ऑफ रेंज वेपन की कैटेगरी में आता है। स्टैंड ऑफ रेंज मतलब कि इसको जो आप अटैक करते हो जब, तो ऐसी जगह से इसको मारते हो कि आपको जो है जो दुश्मन है वो आपको ऊपर डिफेंसिव फायर ना कर पाए। जो अब करंट हमारा ब्रह्मोस है उसकी 450 किलोमीटर्स की लगभग रेंज है, और कहा जा रहा है आने वाले टाइम में इसको 600 किलोमीटर्स कर दिया जाएगा। वन ऑफ द फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल वर्ल्ड में है ये। 3 टाइम्स मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड ये ऑपरेट कर सकता है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अम्बेडकर सर्किट। तो ये आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन टूरिज्म एंड कल्चर मिनिस्टर जो है उन्होंने अनाउंस किया कि एक टूरिस्ट ट्रेन चलेगी अम्बेडकर सर्किट को कवर करने के लिए। तो अम्बेडकर सर्किट क्या है? पहले इसको ऑफ कोर्स प्रपोज किया गया था एज इसका नाम पंच तीर्थ रखा जाना था 2016 में। पंच तीर्थ का मतलब क्या है? जन्मभूमि जो आपके अम्बेडकर जी की मऊ में मध्य प्रदेश में, शिक्षा भूमि जहाँ पर वो लंदन में पढ़े थे, दीक्षा भूमि नागपुर में जहाँ पर उन्होंने बुद्धिज़्म को एम्ब्रेस किया था, महापरिनिर्वाण भूमि जहाँ पर उनका डिमाइज हुआ था दिल्ली में, और चैत्य भूमि, ठीक है, जहाँ पर उनकी क्रिमेशन हुई थी चौपाटी मुंबई में, ठीक है। तो ऑफकोर्स लंदन को तो हम ट्रेन से कवर नहीं कर पाएंगे, बट बाकी जगहों को अम्बेडकर सर्किट में कवर किया जा रहा है। और मोटिव ये है कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जाए, नॉट जस्ट दी दलित कम्युनिटी, ठीक है। सो टूरिज्म सर्किट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 15 टूरिस्ट सर्किट्स अंडर स्वदेश दर्शन स्कीम ऑलरेडी जो है वो हम अभी तक बना चुके हैं, आइडेंटिफाई कर चुके हैं। अगर हम ट्रेन के हिसाब से देखें तो रामायण, बुद्धिस्ट और नॉर्थ ईस्ट सर्किट जो है वो ऑलरेडी एक्टिव है। अम्बेडकर जो है वो सर्किट वो 4th सर्किट होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डाइविंग सपोर्ट वेसल्स। तो ये आपके सिक्योरिटी रिलेटेड टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डाइविंग सपोर्ट वेसल्स निस्तार और निपुण, इनको रिसेंटली जो है वो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने जो है वो विशाखापट्टनम ने बनाया इंडियन नेवी के लिए, और उनको लॉन्च किया गया। तो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड शिप है ये, इंडिजिनसली डिजाइंड और बिल्ट है। डीप सी डाइविंग ऑपरेशंस के लिए काम आएंगी इंडियन नेवी के ये, और सबमरीन रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी ये हेल्प कर सकती हैं, ठीक है। तो पेट्रोलिंग, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस या हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस जो हाई सीज में किए जाते हैं इंडियन नेवी द्वारा, उसमें ये सपोर्ट वेसल्स काम आने वाले हैं, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is live streaming of Supreme Court proceedings. So this topic is important for your polity section. So recently the Supreme Court has decided to live stream its proceedings in crucial constitutional bench cases. So of course, so you know that what is the background of this topic. So recently on 26th of August, when the then Chief Justice of India N.V. Raman ji retired, the Supreme Court streamed its proceedings live. But this issue dates back to 2018, when in Swapnil Tripathi judgment, the Supreme Court cleared the deck for live streaming of cases which are of national and constitutional importance. So at that time, the Supreme Court gave notice to the Attorney General of India seeking his views on this issue, and after receiving the recommendations of the Attorney General, Supreme Court issued certain guidelines, which also included allowing transcripts and archiving the proceedings. So what were the recommendations of Attorney General? So he said that of course we can go for a pilot project in court number 1, which is of course the Chief Justice of India's court, and only initially we should be
conducting the live proceedings of constitutional bench cases. So that's what Supreme Court has recently decided now after the recommendations of AG. So AG also suggested that the Supreme Court must have the power to withhold broadcasting and cases, certain critical cases like matrimonial matters where you do not need to put up live proceedings so that family matters should not be discussed in public. Also, in the interests of juveniles and protection and safety of the private life of young offenders, these matters should also not be live streamed. And also the matters of national security. So because there is confidential information which should not come out in the public. So, after this Triparthi judgment, the Gujarat High Court began live streaming its proceedings in July 2021. Currently, Jharkhand, Karnataka, Madhya Pradesh, Odisha, and Patna High Courts have started live streaming of their proceedings. And what is the status elsewhere in the world? In USA, audio recordings and transcripts of oral arguments are allowed. In Australia, it is allowed. Live streaming is allowed, but not everywhere in Australia. In United Kingdom, the broadcasting is done with a 1 minute delay, and the coverage can be withdrawn in sensitive cases also. Okay, so that's what we are going to do. Also, we are going to test this in constitutional bench cases initially. And what will be the benefits of it? Of course, it will improve transparency. We would be seeing how the justice system works. The public would be able to engage with the justice system and understand the nuances related to constitution and laws. There will be positive systematic corrections in the judiciary also. In the US Supreme Court, it was observed that during judicial interactions, highly gendered terminologies were used, but after this oral recordings were done, the court repaired itself, or the court corrected itself. But there are concerns also. So, you know that already on YouTube and social media platforms, you have seen videos with sensational titles and little context with respect to Indian courts. And so that's why there is a fear that the Supreme Court proceedings would be irresponsibly used, and the content could be used for spreading disinformation among the public. Also, we have seen from Brazil, the case of Brazil, that the judges start behaving like politicians when they see that they are getting free television time, just like what we have started to witness since the live proceedings of Parliament started. The politicians who are in the parliament, they try to get maximum individual exposure, and they misbehave just to get into news and to justify themselves to their constituency people that they are in news. So basically, it becomes a politician's paradise. So we are having a fear that the justices or the judges should not start behaving like politicians, like we have seen in the parliamentary proceeding cases. So the next topic is left-wing extremism. This topic is important for your security section. So Director General of CRPF has recently said that Bihar is now free of left-wing extremism. So what is left-wing extremism? It is the single biggest internal security threat to India, as per the former Prime Minister Manmohan Singh ji. And this left-wing extremism aims to overthrow the democratic Indian state with using violence. So why there is this left-wing extremism spreads in the country? Of course, there are several factors. Sometimes the government land and community lands are encroached by powerful sections of society, and the police does not act. So the people start losing faith on the governments. Because of poor implementation of laws, the transfer of tribal land to non-tribals happen. The land rights of the traditional land rights are not regularized. There is eviction from lands which are traditionally used by tribals. Sometimes the government acquire land for the irrigation and power projects, but the adequate arrangements for rehabilitation of the people is not done. Land acquisition is done without paying appropriate compensation. There is lack of food security among people. Untouchability is being practiced, and the laws are not implemented to prevent it. Corruption is there, rampant corruption is there. Police misuses the power in such areas. So basically, all these factors are leading towards
reduction of faith on the democratic state of India. Okay, so what are the steps that have been undertaken by the government? So government in 2015 launched this national policy and action plan to address this menace of left-wing extremism, in which the policy said that we have zero tolerance towards violence, but if you are willing to give up arms, we would anyway go for a big push to developmental activities, and we are going to welcome if you give up arms. So capacity building and strengthening of security apparatus of CRPF battalions, etc., is being done. The state police is being modernized. Security related expenditure is given. A special infrastructure scheme has been launched, under which almost 10,000 projects have already been undertaken. Also, subcategorization of districts have been done. So most of the almost 85% of the left-wing extremism violence is concentrated into the districts. These are known as the most affected districts. And once the any district that has been liberated from left-wing extremism influence, those districts are put under the districts of concern category, so that they do not fall back again to the left-wing extremists. So the next topic is PM Cares. So this topic is important for your governance section. So central government has recently appointed Ratan Tata, former Supreme Court Judge K.T. Thomas, and former Deputy Lok Sabha Speaker Kariya Munda as the trustees of PM Cares Fund. So what is PM Cares Fund? It is Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations Fund, which was launched in March 2020. Just remember that it was not launched just for COVID, but for all types of emergency assistance in the country. So Prime Minister is the ex officio chairperson of the PM Cares Fund, and Minister of Defense, Minister of Home Affairs, and Minister of Finance are the ex officio trustees of the fund. So the chairperson of the board of trustees has the power to nominate 3 more trustees. So now these 3 trustees have been nominated here, and they will not get any compensation in this regard. They will have to act in a pro bono capacity. The mission of PM Cares is to undertake and support relief or assistance related work, and anyone who is contributing to the fund will get 100% tax exemption as per the Income Tax Act's section 80G. Also, the companies, if they are contributing to it, their contribution would be counted as into their CSR responsibilities. Also, this fund has been made exempted from the FCRA provisions, so that foreigners can also contribute to it. So let us also compare it with the Prime Minister's National Relief Fund, which was set up in January 1948 to provide immediate relief to the families of those who were killed in natural calamities. So of course, initially the committee which was managing the PMNRF involved Prime Minister as the chairperson, his deputy, Finance Minister, Congress President, and a representative of Tata Trustees, and also an industry representative. But in 1985, during Rajiv Gandhi's tenure, the entire management of the fund was transferred to the Prime Minister, but a joint secretary in the PMO administers the fund on an honorary basis, and this is happening even now. Okay, so as compared to Prime Minister's National Relief Fund, the chairperson of PM Cares is, of course, the Prime Minister, without whose sanction and approval the recommendations of any trustee cannot be approved. But the Prime Minister is not the sole represented in PM Cares as compared to PMNRF. Okay. So the next topic is BrahMos, which is the topic for your security section. So recently, Ministry of Defence has signed a contract with Messrs. BrahMos Aerospace Private Limited for the additional acquisition of dual-role capable surface-to-surface BrahMos missiles at an approximate cost of 1,700 crores. So these are designed for the Indian Navy, and the first BrahMos for the Indian Navy was deployed in 2005, and the current dual-role surface-to-surface BrahMos missile was originally tested in October and December 2020, and they are designed to launch either in a vertical or a horizontal format, and they can target both moving and stationary assets from both land and sea, or the targets who are at land or sea. They are fired at a speed of 2.8 Mach, which is almost 3 times the speed of sound. So now let us also see what is BrahMos. So BrahMos is the combination of Brahmaputra river and the Moskva river, which flows in Moscow, of course, and that's why we have this name BrahMos. It can be fired from land, warships, submarines, and Sukhoi
30 fighter jets. It's a two-stage missile with solid propellant booster at the first stage and liquid ramjet as the second stage. It is kind of a system which is known as the standoff range weapons, in which the missile is fired from a range which is sufficient to allow the attacker to evade the defensive fire from the enemy. Okay, it has currently a range of around 450 kilometers, but it has been planned that since we have already joined the MTCR, so now the range can be extended to 600 kilometers. It is one of the fastest cruise missiles in the world, and it has almost three times the more speed, more than the its speed is almost three times more than the speed of sound. It works also on the fire and forget principle, which means that it does not require further guidance after it has been launched once. So the next topic is Ambedkar Circuit. So this topic is important for your art and culture section. So the government, the Union Tourism and Culture Ministry has announced a special tourist train to cover the Ambedkar Circuit. It was initially proposed as the Panch Tirath in 2016. What is the meaning of the term Panch Tirath? It means all the 5 places which are associated with the B.R. Ambedkar ji. First is of course his Janmabhoomi, where he was born in Mao, that is in Madhya Pradesh. Second is the Shiksha Bhoomi that is the place in London where he stayed while studying in the UK. The third is the Diksha Bhumi in Nagpur, where he embraced Buddhism. Fourth is the Mahaparinirvan Bhumi, a place where he died in Delhi. And Chaitya Bhumi is the place where he was cremated in Mumbai or Chowpatty. Okay, so the idea of this Ambedkar Circuit is to attract tourists just beyond the Dalit community, and almost 15 tourist circuits under the Swadesh Darshan scheme have been identified by the government in 2014 and 15. In terms of train collaborations, we can see that Ramayan, Buddhist and Northeast circuits are already active, and the Ambedkar circuit would be the fourth one. So the next topic is diving support vessels. So this topic is important for your security section. So diving support vessels have Nistar and Nipun have been built by Hindustan Shipyard Limited, and these will have been launched recently for the Indian Navy. They are first of the kind indigenously designed and built ships for the Indian Navy. They will be deployed for deep sea diving operations and to undertake submarine rescue operations also. Apart from that, sustained patrolling, conducting search and rescue operations, and also carrying out helicopter operations at the high seas would also be done using these diving support vessels. So these were our topics for today. Please also download the weekly current affairs compilation from our Telegram group today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.